Hello students, I'm back with your SST class. Yesterday we have finished the chapter number 3, movements of earth and its effects. So students, before moving ahead, before moving forward, I just want to say you something, that we have done this chapter, means explanation part and reading part. I have done with it. Today we will discuss the question answers only. This is the discussion your session of question answers. No need to worry about it. I'll send the PDF of question answers as well. मैं question answers की PDF, question answers की file, I'll send it to you. You can write it from there. But today only we will discuss the question answers so that it will be easy for you to understand. This is just a discussion of question answer round, and that file from you can write the question answers that I'll send you within 1 or 2 days. Just wait for that file to come, and before that we will discuss the answers. Now be with me on screen and we will discuss the question answers. So students, this is the chapter. We will do question answers today. As I told you कि हम चैप्टर एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ आपको, and today is Wednesday and tomorrow Thursday we will do the repetition of the classes. Means Thursday, as you already know that Thursday की class जो होती है that is a recap class. Means आपको जो आपने पूरे वीक में किया है उसका हम रिपीटिशन देते हैं, सो दैट अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू. So today we will do the question answers. Only discussion of question answers will be there, and written part I'll send it to you tomorrow or day after tomorrow. You can write it in your notebook from that file. Only discussion we will do now only, so that if you are whenever you are writing the question answers in your notebook, it will be easy for you to write. So we'll start with the bookwork within the chapter that we have done earlier as well. Fill in the blank. As on my screen here you can see, dash and dash are the two movements of earth. Earth की two movements कौन सी हैं? Rotation and revolution. Now I am moving forward. Yes. A year with dash days is called a leap year. Leap year में कितने दिन होते हैं? 366. As here you can see 366 is there on two places, so you can tick on both the places 366, and after that I am moving again forward. Yes. So what is a leap year? ओरल क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. लीप ईयर किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, एवरी 4 ईयर के बाद जो ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं. सो द आंसर विच वी कैन गिव इज द ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर. सो व्हाट इज अ लीप ईयर? द ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर. So what causes day and night? Day and night किससे बनते हैं? रोटेशन से या रेवोल्यूशन से? Yes, very good. From rotation. Day and night किससे बनते हैं? रोटेशन से बनते हैं. And revolution से क्या बनता है? Seasons. Yes. So what will be the answer of it? What causes day and night? Yes, rotation causes day and night. So now here we are having ticked the correct option. The fixed path on which the earth revolves. Fixed path जिस पे earth revolve करती है, that is orbit. No, it is not axis, it is orbit. fixed path जो होता है वो orbit होता है. axis तो वो imaginary line है जिस पे earth अपने ही उस पे rotate करती है. That is the imaginary line at the center of the earth on which the earth rotates. So fixed path जिस पे earth rotate करती है, earth revolve करती है, that is orbit. So now revolution causes. revolution से क्या बनता है?
रेवोल्यूशन से सीजन्स, यस वेरी गुड. रोटेशन से डे एंड नाइट एंड रेवोल्यूशन से सीजन्स. Now again we are having MCQs, so I'll read it for you. The dash is an imaginary line that run through the center of the earth from the north pole to the south pole. Now they are saying the imaginary line, the dash is the imaginary line. कौन सी imaginary line है वो? Center of the earth from the north pole to the south pole, that is axis. Yes. The spinning of the earth on its axis called. जब अर्थ अपने ही एक्सिस के ऊपर स्पिन करती है उसको क्या बोलते हैं? उस स्पिनिंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मूवमेंट को, दैट इज रोटेशन. यस वेरी गुड. नाउ गिव अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ अब इसका आंसर आपको किस में देना है? सिंगल वर्ड में देना है. मीन्स विद इन अ सिंगल वर्ड और वन लाइन यू कैन से. So the first question is the imaginary line on which the earth rotates. कौन सी है वो imaginary line जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करती है? That is, yes I am waiting. Yes, that is axis. The time taken by the earth to complete one revolution. कितना टाइम लगता है अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? 365 1/4 days. This causes day and night. डे एंड नाइट किससे बनते हैं? यस, डे एंड नाइट बनते हैं रोटेशन से. रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट. सो दिस सिंगल वर्ड आंसर अगेन आई एम जस्ट डिस्कसिंग. द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट. इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करती है, दैट इज दिस वन क्वेश्चन. हियर आई एम. द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट इज एक्सिस. The time taken by the earth to complete one revolution. Yes, the time taken by the earth to complete one revolution is 365 1/4. And this causes day and night. Day and night किससे बनते हैं? Rotation of the earth on its axis causes day and night. Now, here are our short answers. So what are the two movements of earth? Very easy answer. The two movements of the earth are rotation and revolution. Yes. Name the four main seasons. Four main seasons कौन से हैं? Yes. Summer, winter, spring and autumn. Four main seasons कौन से हैं? Summer, winter, spring and autumn. And third question, when it is summer in the northern hemisphere, which season does the southern hemisphere experience? जब northern hemisphere में summer है तो southern hemisphere में कौन सा weather होगा, कौन सा season होगा? Yes, waiting for your answer students. Yes, it causes it एक्सपीरियंस विंटर देयर. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर. सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स इसके आंसर जो है हमें 2 और 3 लाइन्स में लिखनी है, बट इन शॉर्ट वी विल एक्सप्लेन. द रिटन पार्ट एज आई सेड कि आपको मैं भेजूंगी, यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर. एक्सप्लेन द टर्म एक्सिस. एक्सिस क्या होता है? So it is the imaginary line drawn through the center of the earth joining the north pole and the south pole. What is axis? It is an imaginary line. Axis क्या है? Axis is the imaginary line which joins the north pole and the south pole, and it is a line on which the earth rotates.
एंड व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या है? यस, ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ. ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट फिक्स्ड पाथ है जिसके ऊपर अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है. सो ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स और रोटेट्स अराउंड द sun. So discuss the effect of rotation. Yes, discuss the effect of rotation. So the effect of rotation क्या है students? रोटेशन से क्या बनता है? रोटेशन से हमारे डे एंड नाइट बनते हैं. जब अर्थ जो है रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, तो जो अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है दैट इज डे, और जो सन से अवे होता है दैट इज नाइट. सो हाउ वी कैन राइट इट इन आवर वर्ड्स? आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन. You don't need to write today. I'll send you the file. You can write it from there. So effect of rotation क्या है? So we can write it like this. The rotation of the earth causes day and night. When the earth rotate, only one part of the earth faces the sun, while the other part is away from the sun. The part facing the sun receives the sunlight and has day, while the other part is in darkness and has night. So students, next question is how are seasons caused? Explain with the help of diagram. Diagram is there in book. And how are seasons caused? Season कैसे बनते हैं? So season are caused due to the revolution of the earth around the sun. मतलब कि सीजन बनते हैं जब अर्थ जो है सन के अराउंड रेवोल्यूशन लेती है. सो सीजन आर caused due to the revolution of the earth around the sun. So we can write it like that. And इसके बाद we can write कि the part of the earth that faces the sun experience summer, while the other part is having winter. So diagram is there in book. We can write it. But again I am telling you कि I'll send you the notes. You can write it from there. And diagram also I'll send you. You can draw it from there. So what is leap year and how it is caused? So leap year क्या है? So again the leap year, the year with 366 days is called leap year. And how it is caused? Leap year बनता कैसे है? So इसके लिए we can write. So it is caused because the earth completes one revolution around the sun in 365 1/4 days, and we are having 365 days on our calendar. So 1/4 day of every year is added to make an extra day. This extra day is added to the month of February after every 4 years, and therefore after every 4 years the month of February has 29 days instead of 28. That is leap year. So in these lines we can write the answer, but exact answer I'll send it to you. These are the question answers. ये सारे question के answers are there in book में भी हैं, but still डोंट गेट कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. डोंट थिंक कि आपको क्वेश्चन आंसर्स खुद से लिखने हैं या मैं बोल रही हूँ तो ऐसे ही लिखने हैं. बट आई विल सेंड यू द PDF. दिस इज़ जस्ट अ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, एंड you can write the question answers, and tomorrow I'll again recap the chapter. You can watch the video tomorrow. For if any confusion is there regarding this, then it will be more clear to you. Thank you.